Hello everyone, welcome to our class of 11th account FIGCA. Our series is going on depreciation. Today we are going to solve question number 11. Problem is solution, that is WDV method. This is our second method. Student, we had completed straight line method as well as WDV method. Both methods are different. So question number 1 to 6 it is straight line method, and from 7 to 11 it is WDV method. So both the method we had completed. So this is my last video on depreciation, and definitely we are going to meet with our new topic, rectification of error, in our next video. So it will be coming soon, student. And today let's complete question number 11. So previous video, please check the hybrid introduction and question number 1 to 10. Both SLM and WDV method are there, and below description all video links are available. So go and check the all video so you can easily understand the topic depreciation. So let's begin with question number 11. They are saying that on 1st April 15 Suman trader purchased machinery for 30,000. The first machinery purchased on 1st April and the cost is 30,000, and on 1st October 2015 they purchased further machinery costing rupees 20,000. This is my second machinery, and it is also coming in the first year only, student. So from April to March, my first year opening date is April and closing date is March 16. And this second asset date is 1st October. That means it is coming in the first year only. So in first year we are purchasing assets number 1 for 30,000, but it is on 1st April. And asset number 2 is on 1st October and the cost is 20,000. And further they are saying that on 1st October 16, this is my second year, they sold a machine purchased on 1st April 15 for 18,000. That means in 2016 October, we have to sold the assets number 1, which is purchased on 1st April 15. That means he is selling the assets number 1 for, and the selling price is 18,000. So later on we will find whether it is a profit or loss. And brought another machine 15,000 on the same date. That means on 1st October 16 there will be two entries, one is purchase and one is sales. We are selling assets number 1 and we are purchasing assets number 3. So remember this thing, we have 3 assets over here. Now they are saying depreciation is provided on machinery at the rate of 20% per annum on diminishing balance method. So this is my second method. So we have to calculate depreciation on the balance. If it is a straight line method, that means our first method, then we have to calculate depreciation always on the original value, and depreciation amount will remain same for every year. In diminishing balance method, that is WDV method, the depreciation amount goes on decreasing because it is calculated on the balance. Every year we have to provide depreciation, and there will be definitely a balance. That on that balance you have to calculate depreciation. Now they are saying the financial year close on 31st March every year, that we know. Prepare machinery account and depreciation account for 15, 16, 16, 17, 17, 18. That means 3 years we have to prepare. First we will check the date, which assets has purchased in which year, first year, second year, third year. So by drawing our line, so first we will put the date on 1st April 15 and the financial year ends on 31st March 16. This is your first year. Now check the entry on 1st April 15. That means our opening date is there. So assets number 1. So we have to write purchase number 1, and this is going to use for 12 months. Remember this thing, because at the end of the year we have to calculate depreciation every year on 31st March. So this is used for 12 months. So remember this thing. Then in the same year, that means October 15, you can check from here also. October 15 will appear somewhere here. So what happened on 1st October 15, we had purchased asset number 2 for 20,000. Just write P2. And this asset is used in this year from October to March. That means only for 6 months. So why we are saying that 12 months, 6 months? Our main motive for drawing all this line to know the month. For how many months we are using the assets. So by drawing this line we can come to know that assets number 1 we are using for 12 months. That means depreciation for 12 months. Asset number 2 we are purchasing in October. That means we are using only for 6 months. So at the end we will calculate depreciation, assets number 1 for 12 months and asset number 2 for 6 months. So this you have to remember. By drawing this line you can come to know for how many months we are using the assets.
So we will draw our second year. It will start from 1st April 16 and ends on 31st March 17. So first thing we have to do in the second year, we have to write the balance. That means assets 1 and 2 will be carried forward to in the next year as a opening balance. This is a WDV for the second year 1 and 2. So that means 1 and 2 is over here available. Now we have to check our next date. Our next date is 1st October 16. It is coming in this year only, student. है ना? October 16. April, May, June, July, August, September, October, somewhere here. So what happened on 1st October 16? They had done two entries. First is selling the assets. Which assets? April 15. So here we can come to know on 1st April 15 we had purchased assets number 1. So we have to sold over here our assets number 1. Okay. Now thing is that we have to sold this asset on October. Fine, it's okay. But how many months we are using? From April to October. So it will be a 6 month. You have to count April, May, June, July, August, September. Okay? Don't calculate October because October first date is there. So we have to ignore October. So till September we have to count. So it comes to 6 months. So in our second working note where we have to find out profit or loss, in that we have to calculate depreciation for asset number 1 only for 6 months. So remember this thing. And on the same date we had purchased our third machine for 15,000. So we will write P over here and P3, that means asset number 3. Again we have to charge depreciation for this assets because it starts from October and it will end on 31st March. That means again now we have to calculate from October to March because October first date is there. So for whole month we are using to October, November, December, January, February, March. That means it's a 6 month. So we have to provide depreciation at the end of 31st March. Now thing is that key over here we have only assets number 2. One is going to be sold in October. So at the end we have to calculate depreciation asset number 2 and asset number 3. Asset number 2 we are starting from 1st April. That means we have to calculate depreciation for 12 months. But this asset number 3 is coming on 1st October. That means we have to calculate depreciation for 6 months. So you have to remember that assets 2 we have to calculate depreciation for 12 months and assets 3 depreciation for 6 months. Assets 1 is going to be sold and for this we are going to prepare our second working note to find out the profit or loss. In that we will calculate depreciation separately for this assets number 1. So don't worry about this. So here our second year is completed. So we will draw our third year. It will start from 1st April 17. And it ends on 31st March 18. Now student, again we have to first write down the balance. Which assets are remaining now? Assets number 2 and 3. One is sold out. So don't worry about 1. So 2 or 3. So we have to write balance over here 2 and 3. And in third year nothing has happened. So that means 2 and 3 are used for whole year. That means for 12 months. So depreciation also will come for 12 months. So remember this thing. So from this line we can come to know which assets are remaining, which assets is coming, which assets is going and for how many months we are using. The month is important in depreciation. So this line just inform you कि भाई महीना कितना है, days कितने, वो आपको ध्यान देना है. Now we will prepare our main working note. So from this, in this working note, we require this total depreciation column. This will appear in your ledger side. So first we will write the date for machine number 1, that is April 15. Then assets 2 October 15 and assets 3 October 16. Fine. In first year we have 2 assets 1 and 2. So we have to write the amount for 1 and 2. First assets amount is 30,000. Second assets amount is 20,000. Then we have to provide depreciation. Just we are checking the line. Okay. First assets 1 aaya, 2 aaya. Then now at the year end we have to provide depreciation. That means we have to deduct and depreciation remain will same at 31st March. First assets no issue because depreciation is 20%. Anyhow 20% निकाल लिया हमने 30,000 का. This is for whole year. Again no issue. So 30,000 into 20% comes to 6,000. For this assets number 2 starts from 1st October. That means we have to calculate depreciation for 6 months. So 20,000 into 20% for 6 months. So just see the working note over here. 20,000 into 20% for 6 months comes to 2,000. So we will write 2,000 over here. And nothing is there. That means first of all my first year total depreciation comes to 8,000. So just write down 8,000.
Then we will deduct depreciation for our cost. 30 minus 6, s comes to 24,000. 20,000 minus 2, it comes to 18,000. So this is my opening balance for the second year. Okay, that's why we are writing over here first April 16 balance. This red one balance is this 24,000 and 18,000. Because we are doing WDV method, we required a balancing figure, because on this balancing figure only we have to calculate depreciation. Now we are in the second year. Second year, what happened? Assets number is sold out and assets 3 is coming. So first we will write the assets 3. The assets 3 value is 15,000. So we will write 15,000 over here. Now just remember, assets 1 is sold out in between. So in this working note, we never show the depreciation of the sold assets. So we just provide a dash over here. On 31st March 78 is not there. यहाँ पे शो नहीं कर रहा है. एसेस 1 बीच में ही सोल्ड हो गया. हम डेट लिख रहे हैं 31st मार्च, तो यहाँ शो ही नहीं कर रहा, तो आप डेप्रिशिएशन कैसे लिख सकते हैं? तो जस्ट प्रोवाइडेड डैश ओवर हियर. हाँ, एसेट 2 एंड एसेट 3 इज देयर. Assets 2 is starts from 1st April to 31st March. That means whole year depreciation 18,000 into 20%. So it comes to 3,600. For this 50,000 you have to see कि by 15,000 is appearing on 1st October. In second year, this assets number 3 is used only for 6 months. So 15,000, 20% for 6 months. So calculation, just see the calculation. 15,000 20% into 6 by 12 comes to 1,500. And nothing else is there. So we will calculate our total depreciation. 3,600 plus 1,500 comes to 5,100. Then we have to just calculate the WDV for the third year. So 18 minus 3,600, 14,400, 15,000 minus 1,500, 13,500. Now we are in third year. Third year, no issue is there. Just calculate depreciation for whole year from 1st April to 31st March. Depreciation is always calculated on balancing figure because we are doing the diminishing balance method. So just remember the method, which method we are calculating. If it is a SLM method, instead of diminishing, they are written SLM method. So in third year, our depreciation amount will be calculated on this 20,000. Straight line method means the initial value, the cost value, the original value. We have to calculate depreciation always on the opening value. So thus this is the difference between straight line method and WDV method. So we will calculate now depreciation 14,400 and 13,500 on 31st March 18, 20% निकाल लेंगे. Now total depreciation comes to 5,580 and just calculate the balancing figure for fourth year 11,520 and 10,800. इसके पहले वाले सब में भी मैंने आपको एक की दिया था कि ये वर्किंग नोट का जो लास्ट कॉलम होता है WDV का, अगर आप इसको टोटल करें, इट इज 22,320. अब ये दोनों को प्लस करेंगे ना, 22,320 समथिंग आ रहा है. तो जब हम लोग लेजर बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, तो लास्ट में जो बैलेंसिंग फिगर होगा ना, वो सेम आएगा 22,320. दोनों प्लस करके जो भी फिगर आता है वही आंसर आपको वहां पे मिलेगा आपको. तो यानी आपका सम राइट है. होप सो ये वर्किंग नोट समझ में आया होगा. अब ढूंढ लेते हैं प्रॉफिट और लॉस फॉर सेलिंग दिस एसेट्स नंबर 1. तो दूसरा वर्किंग नोट ड्रॉ करते हैं यहाँ पे. तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1st April 16, 24,000. यानी बच्चों देखो यहाँ पे 1st April 16 है. So this 24,000 is the value on 1st April. We are not selling on 1st April. We are selling on 1st October. That means in the second year we are using for 6 months. So used word आता है. That means we have to calculate depreciation. Then only we come to know the value on 1st October. So first we will provide depreciation 24,000. As you know that this is a diminishing balance method. That means balancing figure पे depreciation आएगा. So on 24,000 20%, but for 6 months. तो ये चीज हमेशा याद रखनी है आपको. 24,000 20% for 6 months. So it comes to 2,400. Depreciation 1st October 16 2,400 माइनस करेंगे. अब WDV आएगा आपका 21,600 on 1st October. On the date of sale, the value of this machine number 1 is 21,600. ठीक है. तो अक्टूबर में इसकी वैल्यू, इसकी कॉस्ट है 21,600. अब चेक करेंगे कि हमने इसको सोल्ड कितने में किया.
तो यहाँ ऊपर क्वेश्चन में दिया था सेलिंग प्राइस 18,000, इसको यहाँ माइनस कर देंगे 18,000। तो अब कॉमन सेंस है बच्चों, कॉस्ट 21 है, सेलिंग प्राइस 18 है, यानी आपको हो रहा है लॉस ऑफ 3,600। सेलिंग प्राइस ज्यादा होता कॉस्ट से तो इट इज प्रॉफिट। बेसिकली आपने इतना सम किया, हमने आज 11 सम कर रहे हैं, तो मैक्सिमम आपके हर सम में लॉस ही आता है। एनीहाउ वर्किंग नोट मुकम्मल हुआ। ये वाले वर्किंग नोट से हमें 3 एंट्री पास करनी, डेप्रीशिएशन ऑन क्रेडिट, सेल्स ऑन क्रेडिट, लॉस ऑल्सो ऑन क्रेडिट साइड। होप सो वर्किंग नोट आपको समझ में आएगा। अभी 2 वर्किंग नोट लेके चलते हैं, इसी के बेस पे हम लेजर ड्रॉ करते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ सुमन ट्रेडर मशीनरी अकाउंट डेबिट क्रेडिट, तो वी विल पुट द एंट्री। हम एंट्री स्टार्ट करते हैं ओपनिंग से। फर्स्ट ईयर में 2 एसेट्स है, एक अप्रैल 15 को, एक अक्टूबर 15 को। एसेट्स परचेज हो रहा है, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन। तो डेबिट साइड पहला एसेट 30,000 और दूसरा एसेट 20,000। डेट याद रखें, डेट आपको यहाँ से मिलेगा। वर्किंग नोट अगर सही से बना दिए तो आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं, आप खाली डेट वाइज आप एंट्री पास करते जाओ। तो परचेज ऑलवेज ऑन डेबिट साइड बिकॉज एसेट्स आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। नाउ फर्स्ट ईयर में थर्ड एसेट्स तो नहीं आया, यानी आपका ये साइड हो गया। अब चलते हैं डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन हमें टोटल लिखना है 8,000। ये वर्किंग नोट इसलिए हमने बनाया ताकि हम टोटल डेप्रीशिएशन लिखे 8,000। डेप्रीशिएशन डेट इज 31st March 16। डेप्रीशिएशन ऑलवेज अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड। तो ऑन 31st March डेप्रीशिएशन 8,000। तो ये जो वर्किंग नोट का ये आखिरी कॉलम है, टोटल डेप्रीशिएशन कॉलम है, इसका फिगर आपको डायरेक्टली लिखना है। आपको बाइफिकेशन की जरूरत नहीं, बाइफिकेशन हमने वर्किंग नोट में कर दिया, तो एग्जामिनर विल कम टू नो कि भाई ये वर्किंग नोट है तो यहीं से आया है। ओके, तो नो नीड टू शो अ सेपरेट 6,000 2,000 देन टोटल 8,000। डायरेक्टली आप आउटर कॉलम में 8,000 लिख सकते हैं। फर्स्ट है और कुछ नहीं, तो क्लोज करेंगे। 50 डेबिट का बड़ा टोटल है, दोनों साइड लिखेंगे। And from this 50 deduct the credit total 8,000, it comes to 42,000, your balancing figure for the first year। तो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, सेकेंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन के आएगा। कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन 42,000 1st April। नाउ वी आर इन द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में क्या हुआ था बच्चों, एक एसेट आया 15,000 का अक्टूबर 16 को। एसेट आ रहा था परचेज एंड डेबिट व्हाट कम्स इन। एसेट नंबर 3 15,000। और थर्ड ईयर में और कोई परचेज नहीं है, तो थर्ड ईयर का आपको डेप्रीशिएशन निकालना है। डेप्रीशिएशन का डेट है 31st March बच्चों, मगर 1st अक्टूबर में आपकी और एक एंट्री है ये वर्किंग नोट 2 की, तो ये भी तो पास करनी पड़ेगी। डेट वाइज जाना है आपको, पहले अक्टूबर आएगा कि पहले ये मार्च आएगा बच्चों? पहले अक्टूबर आएगा ना, तो पहले हम अक्टूबर की एंट्री पास करेंगे। जैसे हमने 15,000 की एंट्री पास की अक्टूबर की, तो उसी तरह से ये भी अक्टूबर की एंट्री, तो इसको भी पहले पास करेंगे। तो ये 3 एंट्री पास करेंगे और तीनों कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। तो पहले डेप्रीशिएशन पास करते हैं अक्टूबर 16 को बाय डेप्रीशिएशन 2,400। देन सेल्स सेम डेट, सेल्स बाय बैंक अकाउंट एसेट नंबर 1 18,000। फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, परचेज डेबिट में और सेल्स क्रेडिट में। परचेज के लिए भी बैंक वर्ड यूज होता है और सेल्स के लिए भी बैंक वर्ड ही यूज होता है। देन कॉमन इज डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन ऑलवेज अपीयर ऑन क्रेडिट साइड। ठीक है, ये आज हमारा लास्ट सम है, तो इसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम लोग इसको। तो पूरी सीरीज हमने आज कंप्लीट की। तो और कोई है एंट्री 1st अक्टूबर में? हाँ, लॉस रह गया हमारा, लॉस लिखते हैं। लॉस भी क्रेडिट में आएगा आपका बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन नंबर 1 3,600। तो 3 एंट्री हमने पास कर दी, डेट वाइज चल रहे हैं, डेट मुकम्मल हुआ। अब चलते हैं सेकेंड ईयर का लास्ट डेट 31st March 17 को। डेप्रीशिएशन लिखना है 5,100। तो साल चेंज हो रहा था, 2017 लिख के फिर लिखे टोटल डेप्रीशिएशन 5,100। अब थर्ड ईयर आपका मुकम्मल हुआ, तो थर्ड ईयर क्लोज करेंगे 4 5 57। तो 57,000 ऑन बोथ द साइड। इसको आपको क्रेडिट के चारों को प्लस करके 57 से माइनस करें, तो आपका सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है 27,900। And this will be the opening balance for the third year, 1st April to balance brought down 27,900. Now we are in the third year. Third year nothing has happened, no purchase, no sales. Directly we have to calculate depreciation and we have to write depreciation 5580. That means total depreciation. And depreciation always appear on credit side and the date of depreciation 31st March 18.
5580 और कोई एंट्री नहीं है तो वी हैव टू क्लोज द अकाउंट। तो डेबिट साइड इज हैवी है 27,900 में से 5,580 माइनस करें तो ये बैलेंसिंग फिगर कम्स टू 22,320। मैंने आपको वर्किंग नोट में बताया था जब आप वर्किंग नोट कर लेते हैं तो ये टोटल लास्ट का जो भी टोटल होगा 2-3 जो भी बैलेंस बच रहे हैं उनको आप प्लस करेंगे। इट शुड बी योर सेम अमाउंट 22,320। आप प्लस करें 11,520 प्लस 10,800 तो आपका ये दोनों प्लस करके भी ये अमाउंट आएगा 22,320। तो ये वर्किंग नोट बनाने से पता चलता है कि आपका आंसर भी राइट है एकदम। आपको यही पता चल जाएगा हमारा सम सही है। आफ्टर चेकिंग द योर टोटल तो अब ये कैरिड डाउन है तो इसको ब्रॉड डाउन तो करना ही पड़ेगा, बैलेंस तो ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ द 4th ईयर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 22,320। तो इस तरह से आपके मशीन अकाउंट कंप्लीट हुई। वापस से बोलो चेक करें आपके आंसर को, लास्ट का ये फिगर प्लस करेंगे, इट शुड बी 22,320। ये दोनों फिगर सेम होना चाहिए तो ये आपका सम परफेक्टली राइट है। नाउ डेप्रिशिएशन अकाउंट, तो डेप्रिशिएशन अकाउंट मशीनरी अकाउंट के बेस पे ही बनता है, हर साल के हिसाब से बनेगा। एवरी ईयर वी हैव टू प्रिपेयर द अकाउंट। तो माय फर्स्ट ईयर इज दिस। तो फर्स्ट ईयर में आप डेप्रिशिएशन वी हैव टू जस्ट चेक द डेप्रिशिएशन एंट्री। तो डेप्रिशिएशन एंट्री यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट में है तो यहाँ क्रेडिट है तो डेप्रिशिएशन अकाउंट में डेबिट साइड। यहाँ डेप्रिशिएशन लिखा था मगर डेप्रिशिएशन अकाउंट में क्या लिखने बोला था मैंने, एसेट्स का नाम। एसेट्स का नाम क्या है, मशीनरी। डेट सेम, अमाउंट सेम, टू मशीनरी अकाउंट 8,000 और कोई एंट्री नहीं है डेप्रिशिएशन की। तो आपका फर्स्ट ईयर डेप्रिशिएशन अकाउंट को बंद करते हैं। डेबिट साइड ही बड़ा है, क्रेडिट में जो 0 डैश है तो 8,000 दोनों साइड लिखेंगे और फिर बैलेंसिंग फिगर और इसका नाम बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड बैलेंस ऑलवेज अपीयर एट द एंड ऑफ द ईयर। फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को, इसको याद रखिए। ये बैलेंसिंग फिगर है, इसको कैरिड डाउन ब्रॉड डाउन का हेडेक नहीं है क्योंकि ये फाइनल अकाउंट में जाता है हमारा। तो इसको यहीं पे छोड़ देना है आपको। अब आना है सेकेंड ईयर में। अब सेकेंड ईयर में देखेंगे आपको बच्चों 2 बार डेप्रिशिएशन है तो डेट के हिसाब से एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। यहाँ क्रेडिट है, यहाँ डेबिट है। 16 October 1 2,400 टू डेप्रिशिएशन अकाउंट 2,400। सेम वे 17 मार्च डेप्रिशिएशन 5,100, यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट साइड। 17 मार्च टू मशीनरी 5,100 कॉपी पेस्ट किया है हमने क्रेडिट वाला डेबिट में। इसको याद रखें, बहुत सिंपल होता है, ये लॉजिक लगाएंगे आपका। अब बच्चों देखो सेकेंड ईयर में और कोई डेप्रिशिएशन नहीं है तो अब इसको बंद करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे भी डेबिट साइड ही बड़ा है, क्रेडिट खाली पड़ा है हमारा। तो 5, 6, 7, 7,500 ऑन बोथ द साइड। अब ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। बैलेंसिंग फिगर को क्या नाम देना है, P&L। और बैलेंसिंग फिगर हमेशा साल के आखिरी में आएगा। तो सेकेंड ईयर का जो लास्ट है March 17, 31, तो वो चीज को आपको समझना है। तो ये बैलेंसिंग फिगर एज इट इज हमने ऊपर लिख दिया। तो इस चीज को ध्यान में रखना। अब जब 2 डेप्रिशिएशन आएगा तो आपको टोटल लिखना है P&L के सामने। देन कम टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में तो एक ही डेप्रिशिएशन है, यहाँ क्रेडिट है, यहाँ डेबिट साइड लिखेंगे। डेट सेम, अमाउंट सेम, 5580 और कोई एंट्री नहीं है डेप्रिशिएशन की तो इसको भी बंद कर सकते हैं। आपका डेबिट साइड ही बड़ा है तो दोनों साइड लिखेंगे। और बैलेंसिंग फिगर साल के आखिरी में, यहाँ साल का आखिरी 31 मार्च 18 ही है तो वो लिख लें। और बैलेंस का नाम हमेशा क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरह से हमारा ये डेप्रिशिएशन का सीरीज कंप्लीट हुआ। अगर कुछ डाउट है, कुछ एक्स्ट्रा सम और सॉल्व करने तो प्लीज़ बच्चों आप कमेंट करें, वरना डेप्रिशिएशन ऐसा टॉपिक है जब तक प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। तो प्लीज़ डू द प्रैक्टिस। क्वेश्चन यहाँ पे 11 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड के हैं और 5 क्वेश्चन WDV मेथड के। तो इट इज़ मोर देन इनफ। तो होप सो कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो रेक्टिफिकेशन और एरर साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।